Om Education Center, Himmatnagar, since 2009, Standard 1 to 12, English medium and Gujarati medium. Hi dear students, good morning. I am Janaksinh Rahevar from Om Education Center. Yesterday we have studied about the first part, that is introduction of tenses. Today we are going to continue with the simple tenses. So first, without wasting time, let's start सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? तो एक नॉर्मल मीनिंग बताऊंगा. सिंपल प्रेजेंट टेंस कब यूज होता है? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है जो हम डेली एक्टिविटीज करते हैं उनके लिए. जैसे मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सोता हूँ, वो जाता है, वो करता है, वो नहीं करता है. ऐसे जो ता, ती, तो वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, for that we use simple present tense. Now let's see the uses in a proper way. So first, what is the first use? To express habitual action, habit or custom. कब यूज होता है? कोई habitual action जो हमारी हैबिट से everyday या occasionally we do a particular thing, custom, habit, उसके लिए हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस. लाइक आई हैव रिटन वन एग्जांपल फॉर यू स्टूडेंट्स. आई वॉच टेलीविजन ऑन संडे. मतलब मैं संडे को टीवी देखता हूँ, ता. सो हियर आई वॉच टेलीविजन ऑन संडे, सो आई यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस. देन इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट ए जनरल और यूनिवर्सल ट्रूथ. जो जनरल ट्रूथ होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जिसको नो वन कैन चेंज. लाइक द सन राइजेस इन द ईस्ट. सूरज जो है वो ईस्ट में, पूर्व में ही उगता है. ऐसा नहीं होगा कि वो पश्चिम में उगेगा या वहां से होगा. नो, इट इज एन यूनिवर्सल, इट इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ. सो वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस. देन थर्ड पॉइंट, टू इंडिकेट अ फ्यूचर इवेंट. This is very important. To indicate a future event which is a part of a plan or arrangement. मतलब कोई फ्यूचर में होने वाली इवेंट जो हमारा ऑलरेडी अरेंजमेंट या प्लान में है, ऐसी चीज के लिए भी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस. मींस हमने कुछ प्लान करके रखा है, होने वाला है फ्यूचर में, बट हमने ऑलरेडी प्लान कर दिया है. मींस वी यूज simple present tense. Example is written, the school reopens next week. मतलब स्कूल अगले वीक खुलने वाली है, तो खुलेगी ऐसे नहीं बोलेंगे, खुलने वाली है, because it is already planned. Next, to introduce quotes with the verb says. जो हम कोट्स लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमा में, स्पेशली व्हेन यू कन्वर्ट डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, वहां पे जो इन्वर्टेड कॉमास वाली जो सेंटेंसेस आते हैं, एट दैट टाइम दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब. टू व्हेन योर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट टेंस, दैट इज सेज. जब सेज होता है तो ये जो है उसमें प्रेजेंट टेंस का यूज होता है. कौन सा प्रेजेंट टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस. नेक्स्ट पॉइंट, exclamatory sentences that begin with here or there. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आते हैं जिसके पीछे ऐसा साइन होता है, तो ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर हम लोग यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस. कौन से एक्सक्लेमेटरी? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द सेंटेंसेस व्हिच बिगिन विथ हियर और देयर. हियर वी गो, देयर ही कम्स. तो ऐसे सेंटेंसेस में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं. Dear students, now let's study the sentence formation for the simple present tense. Now we will study the three types of sentences. First, affirmative, जो हाँ वाले होते हैं, मैं खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ. Second, negative sentences, मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं पीता हूँ, मैं नहीं सोता हूँ.
थर्ड, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो क्वेश्चन मार्क से खत्म होते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्वेश्चन मार्क मीन्स क्या मैं खाता हूं, क्या मैं सोता हूं। सो दिस वे वी हैव टू स्टडी द थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशन ऑफ ऑल द टेंसेस। सो फर्स्ट बिगिन विथ सिंपल प्रेजेंट टेंस। नाउ व्हाट इज देयर? सेंटेंस फॉर्मेशन अफर्मेटिव. What is the sentence formation for affirmative sentences? Subject plus V1 SES plus object. For negative sentences, subject plus do does plus not plus V1 plus object. And for interrogative sentences, do does plus subject plus V1 plus object plus question mark. Now here I have written something not. Now what is the not? We never use SES with the verb for negative and interrogative sentences. Means जब नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो हम वर्ब के साथ एस जो यहाँ पे यूज करते थे वो कभी भी करेंगे नहीं. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आई हैव रिटन एस इन अ ब्रैकेट. व्हाट डज इट मीन? दैट वी शुड नॉट यूज एस ऑल द टाइम. When should we use and when should we not use? So for that, when your subject is he, she, it or any singular noun, जब ये होगा तब आप V1 के साथ SES यूज करोगे डियर स्टूडेंट्स. बट when your subjects are like I, we, you, they और plural, जब ऐसी चीज होगी तो you will not use SES with the verb. यूज नहीं करना है, only you have to write V1. So this is very important, and also this one. So let's begin the sentences. I have written two sets of examples. First, affirmative, I play cricket. Now I play cricket means मैं क्रिकेट खेलता हूं. I, what is I? I is here subject. What is it? Subject. Then your play is your action word, means it is a verb. Now I have not used SES with play. मैंने play लिखा है, plays नहीं लिखा है. Why? Because my subject is I. और जब I होता है तो SES को हम उसके साथ यूज करते नहीं है. Then what is cricket? Cricket is my object. We can write I play cricket every day, I play cricket on every Sunday, whatever. So remaining part, extra words after the subject are known as objects, or you can say extra words in short. Next sentence is your negative. Now what is your subject? First part is subject. So subject is I. So I have written I. Then do, does. You should know. Yesterday in the previous part I have explained when should we use do and when should we use does. When your subject is he, she, it or singular, you have to use does, and when your subject is I, we, you, they or plural, you have to use do. Only for negative and interrogative sentences for the simple present tense. Remember this. So do does में से कौन सा लगाएंगे हम? Do. Then your negative word, that is not. Then your V1 means play. यहाँ पे तो SES कभी भी लगाना नहीं है. And your object is cricket. So what is the sentence? I do not play cricket. Then interrogative part. So first you have to write auxiliary verb, that is do or does. Now when our subject is I, so we use do. So do, then your subject means I, then your V1 means play, and then your object means cricket. And don't forget to put the question mark at the end of an interrogative sentence. Let's see one more example so that you will be master of simple present tense. She eats an apple. What is she? She is subject. इट्स मतलब क्या हुआ आपका V1. अब यहाँ पे मैंने इट के साथ SES डाला हुआ है, मीन्स S लगा है इट के साथ, EATS. सो इट्स कब लगा हमारा? व्हेन आवर सब्जेक्ट इज फ्रॉम दिस सेट. सो आवर सब्जेक्ट इज शी, सो वी हैव टू यूज SES. सो आई पुट इट शी eats, and what is our object? An apple. Now when we convert it into negative, she means our subject, then do, does. We use does with she और ये सब होता है तो क्या लगाते हैं?
does. So she does, then not, then V1 means it. यहाँ पे S ES आएगा नहीं. Whether our subject is he, she, it, I, we, you, they, anything. We never put S ES with the verb for negative and interrogative sentences. Then our object is an apple. So this way we have written the sentence, she does not eat an apple. Then next is interrogative. So does she eat an apple? Question mark. Does she eat an apple? तो question mark हो गया, means we have completed two sets of examples. Now more sentences you can write like she sings a song, she does not sing a song, does she sing a song, they clean the room, they do not clean the room, do they clean the room, I grow plants, I do not grow plants, do I grow plants. So similarly you can write so many sentences. That is for your homework. Write 10 sets of examples so that you will be the master of simple present tense. Dear students, let's start second tense, simple past tense. second tense पढ़ेंगे हम लोग, सिंपल पास्ट टेंस. अब सिंपल पास्ट टेंस किस लिए यूज होता है? तो जो हमारे पास्ट में आदतें थी या पास्ट में हमेशा करते थे, वो खाता था, वो नाचता था, वो गाता था, वो ये करता था, वो करता था, ऐसी चीजों के लिए हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट यूजेस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस कब यूज होता है? सो फर्स्ट पॉइंट, to indicate an action that happened in the past and to report completed actions. मतलब पास्ट में कोई चीज हो गई है और उसका हम कंप्लीट होने के बाद जब रिपोर्ट देते, उसने खाना खा लिया, उसने ये कर लिया, उन्होंने दुकान बंद कर दी, ऐसी चीजों के लिए we use simple past tense. So let's see the example. We closed the classes at 7 PM. हमने क्लासेस कब बंद किए? 7 बजे शाम को. So I have written the sentence, we closed the classes at 7 PM. This is V2. We use in simple past tense. Later on we will study during the sentence formation. So we closed the classes at 7 PM. For this type of sentences we use simple past tense. Second point, to indicate past habits or repeated events that are now over. हमें ऐसी पास्ट हैबिट्स जो पास्ट में हमारी आदतें थी या कोई रिपीटेड इवेंट्स जो अब खत्म हो गई है, ऐसी चीजों के लिए we use simple past tense. I always rode a bike to school when I was young. जब मैं young था, छोटा था, अभी भी young हूँ, बट जब मैं स्कूलिंग में था, स्कूल टाइम में था, तो उस टाइम पे मैं बाइक चलाता था, बाइक लेके मतलब स्कूल पहुंचता था. I always rode a bike to school when I was young. So again simple past tense. Third point, the habitual past can also be expressed by using used to. मतलब पास्ट में जो किसी की, हमारी किसी की भी जो आदतें थी उसको शो करने के लिए we use used to. मीन्स मैं ऐसा करता था, मेरी आदतें ऐसी थी. तो माई ग्रैंडफादर यूज्ड टू रीड अ फ्यू चैप्टर्स ऑफ द गीता एवरी डे. मेरे जो दादाजी है, ग्रैंडफादर है, वो रीड करते थे, क्या करते थे? गीता के चैप्टर्स, कुछ पेजेस, उसके कुछ चैप्टर्स हमेशा पढ़ते थे. सो फॉर दिस वी यूज टू, जो पास्ट में आदतें थी. सो फॉर ऑल दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस वी यूज सिंपल पास्ट टेंस. Dear students, now see the sentence formation for the second tense, simple past tense. Now again there are three types of sentences: affirmative, negative and interrogative. For affirmative sentences, what is the sentence formation? Subject plus V2 plus object. For negative sentences, what is the sentence formation? Subject plus did plus not plus V1 plus object. And for interrogative sentences, did plus subject plus V1 plus object plus question mark. Again I repeat, for affirmative, subject plus V2 plus object. Negative, subject plus did plus not plus V1 plus object. Interrogative, did plus subject plus V1 plus object plus question mark. Remember, we
ऑलवेज यूज V1 विथ did। विथ did मीन्स क्या है यहाँ पे कि जिस सेंटेंस में did होता है वहां पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, V1। मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है। सो जब भी आपके सेंटेंस में did आता है कब आएगा, ओनली इन द नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। यहाँ पे कौन सी फॉर्म थी, V2। यहाँ पे एस ऐसा नहीं लगाना है, बहुत सारे बच्चे लगाते वेंट्स, वेंटेस, व्हाट इज इट, सो डोंट यूज इट। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। अफर्मेटिव, he sang a song in the party, उसने पार्टी में गाना गाया, ऑलरेडी ओवर हो गया। सो वी यूज सिंपल पास्ट टेंस। नाउ व्हाट इज saying, दिस इज योर V2, दिस इज योर सब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस this is all comes in your object, or we can say extra words. So subject plus V2 plus object means affirmative sentences for simple past tense. He sang a song in the party. Now convert it into negative. He did not sing a song in the party. He, what is he, subject, then did. So here we don't have a choice like do or does, always you have to put did. So did then not, so we put it not। V1 आ जाएगा, V2 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, V1। sang becomes sing, और यहाँ पे भी sang becomes sing। तो he did not sing a song in the party, ये sing का क्या हो गया, sang। He did not sing a song in the party। Now when we write interrogative sentences, it always starts with did। did plus subject plus V1 plus object plus question mark। आपको बेटा एक चीज याद रखना है, there are two main types of interrogative sentences। One is WH type of questions, another is non-WH type of questions। In short, I explain WH questions means the questions which starts with WH words like who, where, whom, whose, which, what, how, etc. So उसमें जब स्टार्ट होता है तो याद रखना है your subject will come on the third place। कौन से पे आएगा, थर्ड प्लेस पे। Who are you, are you सब्जेक्ट है, कौन से प्लेस पे आया, थर्ड। Where are you going, तो you कौन से प्लेस पे आया, थर्ड प्लेस पे। But when you write non-WH questions, like non-WH means कौन से questions होंगे, the questions which starts with non-WH words like is, am, are, was, were, has, have, had, will, shall, can, may, might, all the modal auxiliary words, then do, does, did, ऐसे जितने भी मतलब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से उनसे जो स्टार्ट होते हैं क्वेश्चंस, उसमें सब्जेक्ट ऑलवेज सेकंड नंबर पे आएगा, ये आपको याद रखना है। अभी तो सिंपल टेंस चल रहा है, सेंटेंस फॉर्मेशन आर वेरी शॉर्ट, बट व्हेन वी विल स्टडी अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, future perfect continuous tense, sentence formation will become bigger. So at that time always remember subject will come at the second place only for non-WH questions, remember it। Let's see the second example। They drew pictures, they did not draw pictures, did they draw pictures, drew, this is V2, this is your subject and this is your object। So subject V2 object, subject V2 object। Now when we convert it into negative or interrogative, did will come negative, subject plus did plus not plus V1 plus object। subject क्या है हमारा, they did not। अब V2 आपका draw drew था, उसका क्या हो जाएगा, V1 draw। they did not draw, object क्या है आपका, pictures। what is the complete sentence, they did not draw pictures। क्वेश्चन में क्या आएगा, did, subject is they, so did they draw, object क्या है आपका, pictures। did they draw pictures, तो इस तरीके से क्वेश्चन मार्क लगेगा, means we complete sentence formation and examples for the simple past tense। so two tenses are completed। Dear students, let's study the third tense, simple future tense।
नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस? फ्यूचर टेंस मतलब जो फ्यूचर में हम करेंगे, मैं कल वहां जाऊंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, गा गी गू जनरली जो आते हैं उसके लिए भी यूज सिंपल फ्यूचर टेंस. फर्स्ट यूज टू से व्हाट वी बिलीव और थिंक विल हैपन इन फ्यूचर. ऐसी चीज बताने के लिए जो हम मानते हैं कि वो चीज फ्यूचर में होगी, ऐसा हम सोचते हैं, ऐसा हम बिलीव करते हैं. वी थिंक, वी बिलीव दैट इट विल हैपन इन फ्यूचर, ऐसा होगा. एग्जाम्पल, आई बिलीव ही विल ज्वाइन द ऑफिस टुमारो. मुझे भरोसा है कि कल XYZ सर क्लासेस ऑफिस ज्वाइन कर लेंगे, वो कर लेगा, कर लेंगे. सो आई बिलीव ही विल ज्वाइन द ऑफिस टुमारो. ऐसे सेंटेंसेस के लिए जो फिक्स है, ठीक है, हम मानते हैं, ऐसा विश्वास है हमारा, सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज होता है. सेकंड पॉइंट, थिंग्स विच वी कैन नॉट कंट्रोल एंड आर फैक्चुअल. ऐसी चीजें जो हम मानते हैं कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, जो फैक्चुअल है, फैक्ट के बेसिस पे है, जो हकीकत में ऐसा होगा, ठीक है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते. द सन विल राइज एट 6 AM. कल सन सुबह 6 बजे के आजू बाजू, या यहाँ पे मीनिंग है एट 6 o'clock द सन विल राइज एट 6 AM अर्ली इन द मॉर्निंग. हम ऐसा मानते हैं और हम एक्चुअली उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारी मर्जी से नहीं बोल सकते कि वो 10 बजे 11 बजे. सो फॉर दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस वी यूज सिंपल फ्यूचर टेंस. थर्ड, टू इंडिकेट एन इंस्टेंट डिसीजन. जो क्विक डिसीजन ले लेते हैं, ऐसा हुआ मैं तेरे साथ ये करूंगा, मैं तुझे ये दूंगा, तुझे घुमाने ले जाऊंगा, फिराऊंगा. तो टू इंडिकेट एन इंस्टेंट डिसीजन, क्विक डिसीजन के लिए वी यूज सिंपल फ्यूचर टेंस. लेट्स सी द एग्जांपल. इट इज योर बिग सक्सेस. कोई छोटे बच्चे या किसी को भी वी से इट इज योर बिग सक्सेस, कांग्रेचुलेशन, तुम्हें सक्सेस मिली है. आई शैल गिव यू अ प्रीशियस गिफ्ट. मुझे तुम्हें कोई प्रीशियस महंगी गिफ्ट देनी पड़ेगी. आई शैल गिव यू अ पार्टी. यू शैल गिव मी अ पार्टी. तुम्हें मुझे पार्टी देनी पड़ेगी, मुझे तुम्हें देनी पड़ेगी. सो फॉर दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस वी यूज सिंपल फ्यूचर टेंस. Dear students, let's see the sentence formation of simple future tense. Affirmative, subject plus will shall plus V1 plus object. For negative, subject plus will shall plus not plus V1 plus object. And for interrogative, will shall plus subject plus V1 plus object plus question mark. Now here there is a selection, will and shall. नाउ विल कब यूज होता है, शेल कब यूज होता है? आजकल आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हर जगह पे आई विल भी होता है, आई शेल भी होता है. तो ऐसा क्यों? बट एज पर द करेक्ट इंग्लिश रूल्स वी हैव टू यूज शेल विथ आई एंड वी. इनके साथ हमेशा शेल यूज होता है. बाकी बच्चे ही, शी, इट, वी, सॉरी नॉट वी, यू, दे, इन सब के साथ यूज होता है विल. मींस इनके साथ तो विल ही यूज करना है, इनके साथ शेल यूज करना है, और समटाइम्स वी कैन यूज विल, आई विल, वी विल, आई विल गो टू बॉम्बे, ऐसा बोलते लोग. करेक्ट है, प्रॉब्लम नहीं है. बट आई के साथ करेक्ट इंग्लिश के हिसाब से ऑलवेज शेल शुड बी यूज. आई शेल, वी शेल, ही विल, you will, she will, it will, they will. तो इस तरीके से आपको यूज करना है. नेक्स्ट, अफर्मेटिव में हमने देखा कि will shall, V1 ऑब्जेक्ट और आगे सब्जेक्ट. मींस इफ वी राइट द एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल लेट्स सी. I shall come to your home. What is your I? This is your subject. With I we use shall. So shall क्या हो गया आपका? सिलेक्शन हो गया will और shall में से. Then come is your V1. I shall come. Then your object is to your home. ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट. I shall come to your home. नेगेटिव क्या होगा? I shall not come to your home. क्या होगा नेगेटिव? सब्जेक्ट है आपका I, उसके साथ लगेगा shall not come to your home. इंट्रोगेटिव आपका होगा shall I come to your home और लास्ट में क्वेश्चन मार्क.
So shall I come to your home? Again I repeat, I shall come to your home. I shall not come to your home. Shall I come to your home? Second example, she will clean the room. She is your subject. With that we will use will. Clean is your verb and the room is your object. So she will clean the room. She will clean the room. She will not clean the room. Will she clean the room? She will clean the room. She will not clean the room. Will she clean the room? And at the end we will put question mark. So dear students, here we complete three tenses: simple present tense, simple past tense and simple future tense. Now with that, again we have to combine all the three simple tenses and let's practice. For example, if I give you one sentence, then 3 3s are total 9 sentences you should be able to make. Like, I grow plants. I do not grow plants. Do I grow plants? I grew plants. I did not grow plants. Did I grow plants? I will grow plants. I will not grow plants. Will I grow plants? तो ये एक पूरा 9 सेट हो गया. Simple present tense, affirmative, negative, interrogative. Simple past tense, affirmative, negative, interrogative. Simple future tense, affirmative, negative, interrogative. Again, one more example I would like to give you. She opens the gate. She does not open the gate. Does she open the gate? She opened the gate. She did not open the gate. Did she open the gate? She will open the gate. She will not open the gate. Will she open the gate? Repeat. She opens the gate. She does not open the gate. Does she open the gate? She opened the gate. She did not open the gate. Did she open the gate? She will open the gate. She will not open the gate. Will she open the gate? So this way, dear students, you should be able to practice all the sentences regarding simple present tense, simple past tense and simple future tense. Thank you. I hope you guys have understood simple present tense, past tense and future tense properly. Keep practicing. Thank you. Janaksinh, Rahevar, Home Education Center.